Hello, sir, Mr. Abjit. Hello, Mr. Shem Romai. Hello. Good afternoon, sir. Hey, good afternoon. Good afternoon. So we'll wait for just a couple more minutes, sir, and we'll start the session. So, Mansi, we can begin now. Our participants will keep joining. Yeah. So, hello and good afternoon, all of you. I am Altamash Khan, Program Coordinator with the Collaborative Advocacy Vertical of Sphere India. I warmly welcome everybody who has joined us today, and many of us will be joining soon. Today, it's a very important session of Interfaith Humanitarian Alliance, the first session of year 2022. We have already held several sessions last year in 2021 and in 2020 also. Today, we are joined by many of the esteemed guest participants, speakers from different organizations based in National Capital Region of Delhi. For our participants who are joining us for the first time, I would like to briefly introduce Sphere India to them. Sphere India is a national coalition of humanitarian development and resilience actors in India. It is a strategic outreach of 155 full members that includes key nodal organizations from UN, international NGOs, national NGOs, CSR, academic institutions, sector networks, experts, individuals, and state IGs. Sphere India facilitates multi-sector coordination, knowledge and capacity sharing, and collaborative advocacy for enhancing accountability to the affected and at-risk population. I'd also like you to take through IFH initiative of Sphere India in this and national level and state level. The world is dealing with emergencies and disasters frequently. Preventing religion-based discrimination and following the values of peace and harmony is the need of our. As influencers, faith leaders have a responsibility to highlight the ways forward for the people
to deal with emergencies and associated behavioral issues. Faith leaders play a critical role in spreading awareness about facts from credible sources to help minimize the fear and anxiety among people. Such steps would not only ease the struggle of the survivors with the post pandemic behavioral issues, but would also deal with infodemic of misinformation and rumor that is playing a crucial role in creating stigma and racism. Understanding the crisis from a humanitarian perspective is a collective responsibility. And faith leaders also have a very crucial role of spreading awareness on credible information to help minimize fear and anxiety, as well as help mitigate disaster. Considering all of these things, especially during a crisis, we look to our leaders, especially the faith leaders, to build preparedness and strengthening community resilience through credible information sharing and humanitarian action. That said, Sphere India's Interfaith Humanitarian Alliance has been doing sessions for the past 1.5 years in different states, with our faith leaders trying to dialogue about COVID response and what work they have done, and also to spread messages on COVID appropriate behavior. We are doing this in collaboration with our partners, UNICEF India and World Vision India. So now we would like to begin the session with the keynote address of our esteemed guest, Mr. Tom White. Mr. Tom is presently working as the Chief of Emergency and DRR UNICEF India. He comes with more than 25 experience of leading large teams and programs with international NGOs, the UN, and donors to respond to major international disasters. Tom has also experience working at the global level, managing a portfolio of the country program, as well as providing advisory support to an influential international donor. He has worked in 20 countries across Africa, Asia Pacific, the Caribbean, and the Europe. So I would like to request Tom to kindly share his keynote address on the role of faith-based organizations in humanitarian actions in response. Over to you, Mr. Tom. Thank you, Altamaj. Before I start, can you hear me? Yeah, absolutely. Quite clear. That's good news. Excellent. So firstly, let me commend Sphere India and everybody in this forum for making this happen. I think this is an excellent initiative and very well timed. It really is an honor to have this role to give these remarks at this stage of the gathering. There's a few things I would like to say. I think, firstly, let's start by saying we all have a role to play. I think the fact that we are into our third year of a global pandemic, we all know that this has struck India as hard as it has struck anywhere else. And it continues to impact all communities in all locations in one way or another, whether it's health, whether it's education. And we all know that there are many other sectors that are impacted in various ways, some visible, some not so visible. So the impact of the pandemic has really rung alarm bells for all of us and reminded us, demonstrated exactly how all of us have a role to play. On top of that, we know that the climate is changing, and we know that the impacts of that change are increasing in terms of geographical coverage, in terms of the frequency of these extreme weather events, and also in terms of the severity, the harshness of those events. We know that cyclones and floods and all these things are increasing in magnitude, in frequency, and all the areas that perhaps were once upon a time not impacted by floods and cyclones are increasingly threatened by these things. So again, this is something that is increasing. We see this happening now. It's no longer in the future, it's now. And we see, if we look at the trends of these things, it's increasing. The impacts are increasing. And the roles of all of us in this room therefore have to increase as well in terms of how we engage with our communities
to prepare for, to respond to, and recover from these things. So the second thing I would like to say is, talking to such an esteemed group of people here, and we really do come from such a wide background. I'm recognizing some names. There are far more here than I would recognize. So greetings to all of you. I think that there's a really key point here, that all of us who engage in humanitarian action have a responsibility to make sure that our engagement and our action is principled and timely. By that, I mean, I'm going to pick out a couple of key principles. I'm going to talk about neutrality. What we do has to be free from discrimination, and it has to be doing what's best for the individual who is at risk or who is most impacted by the situation on the ground at the time. The importance of neutrality means that no matter who might be at risk or impacted, they know that our action and our approach means that they have access to us and they will not be judged by us. The second principle I really wanted to mention there was the issue of humanity. And that's a huge word, we all know that. But what exactly does it mean when it comes to humanitarian action? It really means that those most at risk, those most in need, have access to the assistance that they need. They can reach us and we can reach them. And it really is such a key principle that sometimes is overshadowed by lots of other things going on. But I really wanted to bring that to the fore, and I hope during the course of the meeting others may allude to that in one way or another. But it really means that the assistance we deliver is needs-based. It's based on the severity, based on the need of that individual. And the third thing I really wanted to talk about is the importance of this community, whether as individuals or as a group, really trying to understand how we can engage with humanitarian action in a systemic way. And I think this platform, the way it's happening, is a fantastic example of exactly that. But it doesn't need to stop there. I think the importance of making what we do and how we do it systemic, really developing our systems, whether it's coordination, whether it's communication, whether it's a way of delivering a form of assistance, but really making sure that things are happening in a way that is somehow predictable. And by being predictable, and as a group like this, it really enables all of us to deliver predictable, reliable, principled, in a timely manner at scale. And it really is that at scale that the systems help us to deliver on. So I think where all of this comes together, if we look at the principled humanitarian action and the systemic way that we can organize it, those two together can help you, can help us as a humanitarian community really work together to be able to leverage our respective communities, to be able to influence and engage effectively about what are their concerns and what support do they need to prepare for, to respond to, and to recover from disasters, humanitarian issues. And then at the time of need, when there is a real disaster happening in whichever community it might be, then it really allows all of us, again, as individuals or as a community, to really be able to mobilize those communities, our followers, those who we are really well placed to interact, to influence and engage with. It allows us to mobilize them through our principled action in a constructive way to help those less fortunate, less accessible, perhaps less visible, to be able to support themselves or to reach out to assistance where they be able to find it. So I'll leave you with those 3 points. We all have a role to play. Our action must be principled. And if we can work together in a systemic fashion, in a predictable, reliable fashion, I think we can do an enormous amount. That's not to neglect what we've already done, but this is a fantastic forum and a fantastic
arena where we can all come together and figure out how we can help each other to support those least fortunate, those most vulnerable, to prepare for, to respond to, and recover from shocks. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Tom. Now, I would like to request Mr. Christopher from World Vision India to kindly share some of his opening remarks on role of faith leaders in strengthening community response mechanisms in future exigencies. Over to you, Mr. Christopher. Hello, this is Christopher here. This is really wonderful to be here with you this afternoon, and I'm really grateful to each of you for your time that you can be here with us, and also to our partners, UNICEF and others, Spear India, and the entire Interfaith Humanitarian Alliance who are here to deliberate on the strengthening community resilience through humanitarian action and information sharing. It is very interesting that we are talking and deliberating on community resilience after the series of lockdowns, and now that we are open and we are able to come back. As Tom was mentioning, that we are seeing increasing incidents of disasters, and this is our reality, and we are in this context where we have a series of disasters. But we are talking about community resilience. Resilience is about bouncing back to life, coming back and reviving the life in which that we are all in together. So in this context, some economies thrive, some go through difficulties, but some are are resilient to come back. It is very important for us as individuals as well as communities to understand the ability to come back to life. Looking at this, the role of faith leaders in the disaster risk responses, as well as in strengthening community resilience, I would like to focus on 4 key areas as we have been experiencing this and journeying with faith leaders in our communities. What is happening in our communities? One is the coming together for prayer, where faith leaders come together for prayer, irrespective of faith, and people come and gather together and help in the communities to provide for that spiritual nurture, for people to be resilient, to accept accept the losses that we go through, and come back to life, bounce back. And the second area is about caring for the vulnerable, the weak. In most contexts, we see children have been at the receiving end, have gone through very difficult circumstances. Even in the context of the COVID, many children in poor communities have had to miss out on schooling. Because of the digital divide, no access to digital learning, we see children with learning losses and their inability to cope up with schooling again, and also access to healthcare, losses in their families. Many have become orphaned. Caring for such vulnerable communities, vulnerable children, women, is also a responsibility that faith leaders are, in most occasions, are the first responders to these needs in the communities. And fourthly, about communicating correct information that we see amongst faith leaders, always to provide the correct information to people so that they will stay protected
and will have access to many of the safety mechanisms and also care. Fourthly is about cooperating in community safety and resilience, participating in a wide spectrum of networks within the communities, and how faith leaders can cooperate within the and provide and promote the community safety mechanisms that are present within the systems, and help people to stay safe, and also provide support in being more resilient, so that we can bounce back to life. So with this, and I'm sure that this will be helpful for us in our deliberation as we think through. Thank you. And yes. Thank you, sir. Thank you, Mr. Christopher. He's Associate Director of Faith and Development with World Vision India. And now I would like to give the floor to Mr. Sandeep Singh, who is the North Zone Faith and Development Manager with World Vision India. He will be moderating today's IFHA session. I would like to briefly introduce Mr. Sandeep Singh. He has a professional experience of 16 years with World Vision as humanitarian services in India. He has done his PhD in church management and is also an MBA graduate. He is presently working as Manager of Faith and Development and is based in Lucknow. So I'd request Sandeep to kindly take it from here. Thank you. Thank you, Altamash. Thank you for the brief introduction also. Before we go into the questions, we have six distinguished panelists among us. So I would like to introduce those panelists within you. Our first distinguished panelist is Sister Sujata. She is from the Brahma Kumari Samaj, and she is serving the Kalkaji branch, and she has dedicated her life for 30 years for the service of humanity. She is a motivational speaker and gives spiritual discourses in different institutions like RWAS, schools, colleges, banks, and more, motivates people. Our second distinguished panelist is Nishat Ashmi. She is the founder of Blessing NGO. She has done MSW, and she's also a teacher and has 13 years of experience. She supports the community by providing them with basic financial and technological support. She utilizes her essential interpersonal communication and listening skills. She promotes public awareness programs for relevant issues. She conducts different program activities. She decided to work by achieving a mission for the education and upliftment of the underprivileged. Our third distinguished panelist is Mr. Harinder Pal Singh. He is the president of Space for All Society. He was an executive member of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. He is also a former chairman of Gurmat College. As a chairman, he initiated much applauded and life-transforming short-term Guru Granth Sahib study courses in 2006. The SFA Society aims at sponsoring education for meritorious students who lack financial support. Our fourth distinguished panelist among us is Reverend Varghese Thomas. He is the priest at United Grace Church of India. And Mr. Varghese has done his schooling from Kerala and did his religious studies and earned the Master of Theology. And for past 33 years, he has been in the church work and has primarily school in New Ashok Nagar. He also helps financially poor children and the needy. Our fifth panelist, distinguished panelist, is Nawang Sonam. He is a Tibetan Buddhist scholar, and he comes from the office of His Holiness the Dalai Lama. After doing his primary education, Mr. Sonam joined Sera Monastery University in 1995 to devote his life to the intensive study and practice of Buddhism. Later, he received the highest monarchy audition
of the Bhikshu from His Holiness the Dalai Lama. He is working in the office of His Holiness the Dalai Lama as the English translator and a Buddhist scholar. He has been accompanied by His Holiness to various places in India and to 9 countries around the world. He was formally conferred the highest degree of Kesil Larampa, a traditional degree equivalent to Doctor of Divinity, by Gelugpa, the monastery seat of learning. Our 6th and the finalist, distinguished panelist among us is Naveen Dugar. He is the Chief Secretary of Jain International Trade Organization. He is 49 years old, a businessman, and currently he is the Chief Secretary of the JITO, North Delhi. His team did a commendable job during the COVID crisis. So this was the introduction of our distinguished panelists, and before I go to the questions, if anybody has any kind of a question, they can put it in the chat box so that we can take that questions in the later sessions. So my first question is, what advice would you like to give to the followers to gather, pray and practice faith during the post-pandemic times and prevent social stigmatization and discrimination? So I would request Sister from the Brahma Kumari Samaj to throw some light on that. नमस्कार, ओम शांति। आप सभी महान विभूतियों को और जो धर्म रक्षक है, विश्व सेवक है, आप सभी को मेरा शत प्रणाम। मैं हिंदी में ही बोलूंगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि महामारी के बाद और ऐसे दर्दनाक समय के बाद छोटे मोटे तौर पर तो हमेशा ही विश्व में कोई ना कोई अच्छाई और बुराई का खेल चलता ही रहता है, सुख और दुख का भी खेल चलता रहता है। लेकिन कोविड के दौरान तो हम सभी ने जो एक समय देखा और सभी की मानसिकता देखी, वो बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली थी। तो अब हम सभी मिलकर के क्या करें, तो हम जो ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी में, इस विद्यालय में जहाँ पर निशुल्क सेवाएं हम देते हैं और यहाँ पर रोज हम चरित्र निर्माण करने का ज्ञान सीखते हैं, और हम सभी अपनी प्रार्थना करने वालों को कोविड के बाद भी जो हमारे गवर्नमेंट ने नियम बनाकर दिए हैं कि मास्क लगाकर रखना और सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, ये सब चीजें आज भी जरूरी है ही, परंतु प्रार्थनाओं में, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। हम बहुत बड़े बड़े रूप से संगठन भले ना करें, लेकिन छोटे छोटे संगठन में भी हम इन नियमों का पालन करते हुए अपने मन में सच्चाई, सफाई बनाकर रखें और संसार की सबसे बड़ी परम शक्ति जो ओशन ऑफ पीस है, शांति का सागर परमात्मा है, अगर हम उनके साथ अपने मन बुद्धि का नाता जोड़ते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं, और साथ साथ सभी को ही अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करने का ज्ञान देते रहे, जागरूकता लाते रहे। क्योंकि हमने यहाँ आकर देखा है और स्वयं हमने अनुभव किया है छोटी आयु से ही कि जब हम रोज रोज सकारात्मक पॉजिटिव बातें या आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग व्यसनों से मुक्त होते हैं, कमजोर मानसिकता से मुक्त होते हैं, चरित्रहीनता के अनेक प्रकार के कर्म करने की जो अंदर वृत्ति बनी रहती है, उससे भी बिल्कुल मुक्त होते हैं, और हमारे विचार बहुत शांत, बहुत ही शुद्ध हो जाते, पवित्र विचार हो जाते हैं। तो हमारा ये अनुभव है, विचार है, और आगे हम समाज में ये सेवाएं करते रहे, हम अपने समाज को बहुत ही सुंदर सुखमय बनाए। उसके लिए हम हमेशा ही मेडिटेशन के द्वारा प्रार्थना करते रहेंगे, और प्रार्थना के लिए बहुत जरूरी होती है मन की शांति। मैं स्वयं प्रार्थना करूं, सबके लिए दुआएं करूं, और मेरा मन अशांत हो, मेरे मन में इम्प्योर थॉट्स हो, नकारात्मकता हो, अनेक प्रकार के भेद हो, तो फिर मेरी प्रार्थना
संपूर्ण विश्व में नहीं पहुंच सकती है या दुआएं लग नहीं सकती है। तो हम यही कहेंगे कि हम अपने जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं और समाज के जितने भी लोग हैं, उनके चरित्र का उत्थान करने के लिए निरंतर उनको हम ज्ञान और ध्यान की बातें सुनाते रहे, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरते रहे। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। जैसे हम निरंतर श्वास लेते हैं, ऐसे ही हमें रोज ही अच्छी बातें पढ़ना, अच्छी बातें देखना, अच्छी बातें सुनना और उस पर गौर करना जरूरी है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम एक शक्तिशाली मानसिकता के साथ, एक शुद्ध वृत्ति के साथ, एकता और प्रेम की सद्भावना की भावना के साथ अगर हम सभी फेथ लीडर्स अपना कार्य करें निस्वार्थ भावना के साथ, तो जरूर हम सारे विश्व का एक सुंदर समाज का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। Sandeep ji, please unmute yourself. Oh, sorry for that. सचमुच में बहन ने जो बात कही है कि सच में कि प्रार्थना में शक्ति है। एंड और उन्होंने जो सकारात्मक विचार जो रखे हैं कि हम सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ते रहें, उसी विचार को आगे लेके मैं गुजारिश करूंगा निष्पत हाशमी जी को कि वो आगे आके अपने विचार को व्यक्त करें। So I would like to invite Nishpat Hashmi throw some light on the question. Good afternoon, everyone, and thank you so much Spare India and UNICEF and all your partners कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, जहाँ पर इतने डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज लोगों से के व्यूज जानने का मौका मिला। आपका क्वेश्चन और आपका जो स्टेप है वो काफी अच्छा है। हमें इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलता है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नमस्कार करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। एज अ मुस्लिम, जो इस्लाम वर्ड है, द वर्ड इस्लाम इन अरेबिक मीन्स सबमिशन टू गॉड। इस्लाम शब्द का मतलब है कि गॉड के सामने सबमिट करना। तो एंड देयरफॉर ऑल बिलीवर्स आर बाउंड टू ओबे गॉड्स कमांड्स प्रोहिबिशंस। तो अगर हम इस्लाम है, हमारा इस्लाम है मजहब, और हम गॉड के सामने सबमिट करते हैं, तो हमारा ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम गॉड की कमांड्स को फॉलो करें। तो गॉड की कमांड्स यानी हमारे मजहब में अल्लाह ने ये कमांड्स दी हैं कि हर व्यक्ति को हाइजीन का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस रिलीजियन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप उसको सेकेंडरी ले सकते हैं, हेल्थ को, बॉडी को, क्योंकि जब हम गॉड के सामने हम तभी अच्छे से प्रेजेंट हो पाएंगे जब हम हेल्दी होंगे, हमारा माइंड हेल्दी होगा, हम हाइजीन को फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड मैम ने भी बताया कि ये कोई छोटी मोटी डिजीज नहीं थी। कोविड-19 एक काफी बड़ा ग्लोबल पेंडेमिक रहा है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस पे हमें बात करनी चाहिए। जो आपकी बात से और मिस्टर टॉम की बात से मैं काफी हद तक एग्री करती हूँ कि जो लोकल पब्लिक होती है या जो हमारे फॉलोअर्स या जो भी लोग होते हैं, वो इतना जितना वो फेथ लीडर्स को उनके ओपिनियंस को मॉरल अथॉरिटी देते हैं, उतना वो किसी डॉक्टर, पॉलिटिशियंस या हम जैसे सोशल एक्टिविटीज को नहीं देते। अगर हम कोई गाइडलाइंस निकालते हैं, वो उसको उतना फॉलो नहीं करेंगे, रादर देन कि अगर कोई फेथ लीडर उनको वो गाइडलाइंस या वो ओपिनियन उन्हें दे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो भी फेथ लीडर्स हैं हमारे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब इस तरह का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आए, तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें, और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर वो लोगों को अवेयर करें कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट से हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम इमरजेंसी में बिहेव कर सकते हैं और कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं। तो जब पब्लिक अवेयर होगी और सही पाथ पे अवेयर होगी, तो प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होंगी।
तो इम्पोर्टेंस है काफी सारी चीजों की। अब जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो जो वेल एजुकेटेड कल्चर्ड लोग हैं, जो समझते हैं चीजों को, दीन को भी समझते हैं, रिलीजियस को भी समझते हैं और कल्चर्ड सिविलाइजेशन को भी समझते हैं, तो वो उन रिस्ट्रिक्शंस को विदाउट क्वेश्चनिंग फॉलो करते हैं। लेकिन जिनके पास आप कह सकते हैं आधा ज्ञान संकट समान, जिनके पास आधी नॉलेज है, ज्ञान की कमी है, उन्हें वो रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स रेगुलेशंस जो है एविल फोर्स लगती है, वो उसको बहुत निगेटिविटी में देखते हैं, बिल्कुल पेसिमिस्ट हो जाते हैं, उसे ऑप्टिमिस्टिक वे में नहीं देख पाते। हमारे यहाँ अभी जो ये कोविड रहा है, इससे पहले जो काफी सारे ऐसे टाइम आया है, जैसे सार्स था, H1N1 था, या स्वाइन फ्लू रहा है, तो कोविड-19 इन सबसे कहीं ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। हर कंट्रीज में जो डेथ रेशो रहा है वो काफी रहा है, और जो लोगों का इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और हर तरह से ये डिजास्टर रहा है। हम मुस्लिम्स में जो प्रेइंग कल्चर है, जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है, तो उसको कुछ लोगों ने किया था कि इतना मतलब मस्जिद में नमाज पढ़ने को किया था, तो उसमें हम कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं। 2 मीटर्स का हम उसमें अपार्ट फ्रॉम अदर्स व्हेन आउटसाइड और व्हेन वी आर प्रेइंग, तो 2 मीटर्स का डिस्टेंस हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर जो, अगर हम इंडिया की बात करें, अदर कंट्रीज का सिनेरियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी है, जिसकी वजह से लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कार्सिटी मास्क एंड एक्सपेंसिव हैंड सैनिटाइजर्स एंड द लैक ऑफ कोविड-19 अलर्ट हॉस्पिटल्स। अगर हम बोले कि एक मास्क को 1 टाइम यूज करना है, तो क्या पब्लिक के पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है कि वो हर टाइम मास्क न्यू न्यू परचेज कर सकती है? क्या वो लॉट्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स परचेज कर सकती है? जैसे मैंने एज अ सोशल वर्कर, हम लोगों ने कोविड के टाइम में एक हमने डॉक्टर्स के लिए, वर्चुअल डॉक्टर्स के लिए नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें वो कंसल्टेशन ले सकते थे। तो जो कोविड पेशेंट्स थे वो बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, ना तो वो बर्तनों का, कपड़ों का, हमने उनसे बोला कि आप ये बर्तन इनके अलग करिए, इनके कपड़े आप इनके यूज मत कीजिए या डिटॉल में वॉश कीजिए, पर वो लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कह सकते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड जो है वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ये फैक्टर भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है या जो भी है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो डिप्राइव्ड है, वो सब सेम है, उनकी कैटेगरी सबकी सेम है। थोड़ा सा हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, तो उनका एंटी साइंस एटीट्यूड भी होता है, वो साइंस को इतना नहीं फॉलो करते, तो हमें थोड़ा सा उसमें भी अवेयरनेस की जरूरत है, हमें लोगों को अवेयर करना होगा। इस्लामिक एजुकेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो इस्लाम में भी डिजास्टर मैनेजमेंट की काफी सारे किस्से हदीस और कुरान में बयान किए गए हैं। सर आप अलाउ करें तो क्या मैं कुछ डिस्क्राइब कर सकती हूँ? जी प्लीज। जी, अगर लोगों का ये कहना है कि अल्लाह है, जो होगा देखा जाएगा, या हमें नहीं होगा, अगर हम बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारे किस्से और हदीस से ऐसी बातें बता सकती हूँ कि जिसमें इस्लाम में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के कई किस्से हुए हैं, और उसमें अल्लाह ने प्रिकॉशंस भी बताया है, प्रिवेंशन भी बताया है, इमरजेंसी में क्या करना है वो भी बताया है, और फिर उसका रिजल्ट भी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो, वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट काफी सारे हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, लेकिन क्योंकि कोविड-19 एक हेल्थ क्राइसिस है, तो मैं एक हेल्थ क्राइसिस पेंडेमिक की बात करूंगी। 638 से लेके 639 में अलशाम एक जगह है, वहां पर थाउन नाम का एक डिजीज स्प्रेड हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। तो जब वो क्योंकि इसको मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि ये भी हेल्थ डिजास्टर था, कोविड-19 भी हेल्थ डिजास्टर है, तो बिकॉज ऑफ देम आर हेल्थ डिजास्टर्स, तो आई कैन रिलेट विद देम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एट दैट टाइम, इफ यू हियर द plague raging in a country, then don't enter it, and if you are in that area, do not go out to run from it. It means कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई प्लेग है तो जो जहां पर है वहीं रुक जाए,
यानी अगर आप किसी एरिया के अंदर एंटर हुए हैं और फिर वो प्लेग के बारे में पता चला है, तो आप उसी एरिया में रहें, और जो उस एरिया के बाहर है वो वहीं पर रहे जब तक कि ये प्लेग खत्म नहीं हो जाता या कम नहीं हो जाता। तो इनसे हमें पता चलता है कि क्वारंटीन होना, सेल्फ क्वारंटीन होना, डिस्टेंस मेंटेन करना, लॉकडाउन होना इस्लामिक वे के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। यही हमारे इस्लाम ने बताया है। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी डिजास्टर मैनेजमेंट का। सूरह यूसुफ में एक किस्सा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में कैद कर दिया था जेल में, तो उनको राजा ने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए बुलाया था। वहां के किंग को एक ख्वाब आया था, तो वो बहुत कंफ्यूज थे कि इसका क्या मीनिंग है। तो किसी ने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताना आता है, तो उन्होंने बुलाया था उन्हें। तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि जो आपने ख्वाब देखा है उसका मीनिंग वो ये है। ताबीर मीन्स की ख्वाब की मीनिंग, उसका मीनिंग ये है कि आपके शहर में 7 साल बहुत हरा भरा होगा, बहुत खेती होगी, खूब खाएंगे पिएंगे फलेंगे फूलेंगे। और उस साल के अगले 7 साल बाद जो है सूखा आएगा, ना बारिश होगी, ना खेती होगी, ना खलियानी होगी। तो ये जो 7 साल में खेती होगी, तो इनमें बालियों में से गेहूं को निकालिएगा मत, इनको संभाल के रखिएगा, और सिर्फ उतना ही यूज कीजिएगा जितनी जरूरत हो आपकी कौम को खाने के लिए। यानी उन्होंने ये बताया कि एक डिजास्टर आएगा, और उस डिजास्टर में ना खाने को होगा ना पीने को होगा। तो उस डिजास्टर की प्रिवेंशन उन्होंने ये बताई कि इमरजेंसी के लिए आप ये अनाज को सेव करके रखें फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स। तो कुरान में भी और हदीसों में भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, पेंडेमिक को लेके, प्लेग को लेके बहुत सारी हदीस हैं। सही मुस्लिम बुखारी में भी हैं, सूरे बकरा में भी हैं। सूरे बकरा की एक आयत है, आयत नंबर 55। उसमें इट इज स्टेटेड दैट अ डिजास्टर इज अ फॉर्म ऑफ लव फ्रॉम अल्लाह एंड अ मीडियम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब हम कहेंगे कि एक डिजास्टर अल्लाह की तरफ से लव कैसे हो सकता है? वो इसलिए है, देयरफॉर डिजास्टर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ टेस्ट which opens up opportunities for people to improve their quality of their faith and devotion. जब हम कोविड से पहले के एग्जांपल में दूंगी, कोविड से पहले हम अपनी जिंदगी में भाग दौड़ में लगे हुए थे, हमें नहीं पता कि कौन अल्लाह कौन भगवान। जैसे ही कोविड आया हम घर पर रुके, तो हमें पता चला ओ ये मेरी माँ भी है, अच्छा मेरी दादी भी जिंदा है, अच्छा मुझे इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, अच्छा थोड़ा टाइम बच रहा है तो मैं प्रे भी कर लेती हूँ, मैं कुरान भी खोल के देख लेती हूँ। तो काफी फ्री टाइम था, तो उस फ्री टाइम में हमने बहुत कुछ रियलाइज किया। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के बिजनेसमैन बन गए, बहुत सारे लोग रिलीजियस हो गए। Excuse me, तो ma'am. I would request to kindly keep it brief as we have two more questions. ओके, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू रिश्वत हाशमी जी। आपने बहुत ही विस्तृत रूप से आपने कुरान और हदीस में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बताया। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड रिक्वेस्ट नाउ मिस्टर हरपाल सिंह throw some light on the question, and I would request the panelists to keep it short, थोड़ा विस्तृत रूप में हमको बताएं। You are asking me? जी सर, यस सर। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आपके इस जो ये वेबिनार आपने जिस सब्जेक्ट पे लिया है, ये बहुत ही मैं आपकी इस बात के लिए हैट्स ऑफ करता हूँ। देखिए, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो इस दुनिया में, और कोरोना ने चाहे हमारे से बहुत कुछ छीन लिया है, पर हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं छीन सकता। हर प्रॉब्लम का, हर दुख का, हर समस्या का समाधान होता है। कोरोना का भी समाधान था और है, पर ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है। देखिए, जो चीजें परमात्मा ने इंसान के लिए नहीं बनाई वो इंसान कंज्यूम कर रहे हैं। नॉन लिविंग नियम लिविंग बीइंग पर आजमाए भी जा रहे हैं, अपनाए भी जा रहे हैं। द लॉ ऑफ नेचर इज बीइंग वायलेटेड। देखिए, इट इज वेरी इजी टू चूज बिटवीन ए राइट एंड ए रॉन्ग।
but it's very difficult to choose between two wrongs. अब देखिए, एक तरफ कैपिटलिज्म है, ग्रीड है, और दूसरी तरफ जो है वो रिलीजन से, धर्म से दूरी है, वैल्यू सिस्टम से दूरी है, वायलेशन ऑफ नेचर हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब से बलिहारी कुदरत वस्या कि परमात्मा इस पूरी कुदरत में जो है वो समाया हुआ है। तो इट मीन्स वी आर वायलेटिंग डिवाइन लॉ, वी आर वायलेटिंग गॉड। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो शरीरक तल पे जी रहे हैं। Learn to think for themselves and follow their heart instead of obeying value-based traditions. We must understand that human birth is supreme. And it has purpose and divine plan. In Guru Granth Sahib, there is a quote, "Hukam mile vadiyai." It means man is the noblest of all living beings. So we human have learned to control the world outside us, but we have very little control over the world inside us. So post-COVID, we need to reconnect ourselves firstly and ourselves, firstly with ourselves and then with fellow beings. Religion is to unite mankind, not to divide. It's for sharing values. Guru Granth Sahib talks of universal welfare and universal concern. ये यूनिवर्सल वेलफेयर को बोलते हैं सरबत का भला, और ये यूनिवर्सल कंसर्न को बोलते हैं सरोकार। तो फेथ एंड होप आर द हॉलमार्क्स ऑफ रिलीजन. COVID has no religion, and blaming any particular community for the spread is not fair at all. So no doubt we need to maintain social distancing, but we can pray at home and with family. Guru Granth Sahib says, Guru mere sang sada hai nale. God is always with us. No fear of isolation or cut off from people. Dharma gives us the formula of soul searching, gives us the formula of how to design brain. Guru Granth Sahib says, Man mare jivat mar jaan. Whosoever discipline his mind will come to know the secret of life in this life. तो मेरा ये मानना है कि ये जो नॉन लिविंग नियम्स हैं, जो चीजें हमारे लिए बनाई नहीं हुई वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोरोना वहां से ही पैदा हुआ है, और इसका इलाज भी नेचर में ही है, इसका इलाज भी जो है वो हमारे आसपास है। और जो धर्म की बात की है, रिलीजियस फिलोसफीज की बात की है, तो कोई भी रिलीजन जो है वो हर रिलीजन दुनिया का जो है वो जो है ह्यूमन जितनी पेन है उसको बाय प्रे, जिसको हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब में नाम द फीलिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इनटू योरसेल्फ। तो ये जो फीलिंग्स हैं, इससे एक तो आइसोलेशन, जो एक होता है लोनलीनेस, एक होता है सॉलिट्यूड, तो ये हमें सॉलिट्यूड की तरफ जाना है, और वो सॉलिट्यूड की तरफ वही जा सकता है जिसको धर्म की, रिलीजन की जो बेस पता होगी। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसको रिविजिट करने की जरूरत है, और हर धर्म को इसमें जो है पार्टिसिपेट करके लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये मेरे बहन जी, छोटी बहन मेरे बोल रहे थे अवेयरनेस की बात, तो अवेयरनेस जो है ये बहुत जरूरी है, और धर्म होता भी इसीलिए है। धर्म में अब दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होती है विश्वास, एक होता है विचार। तो ये दोनों चलेंगे, विचार भी चलना है, विश्वास भी चलना है। श्रद्धा होती है जिसको जैसे कहते हैं, श्रद्धा को जो रूट है वो नॉलेज होनी चाहिए, उसका जो रूट है वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। होता है ना, एक IQ है, एक जो इंटेलिजेंट है उसको ही मानते थे कि ये पूरा इंसान है। देन इमोशंस आ गए कि इंसान में इमोशंस भी होने चाहिए, फिर EQ आ गया। अब इन 21st सेंचुरी SQ की बात हो रही है, स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये कोरोना का या जितना भी ये अनरेस्ट, वायलेशन इन द नाम ऑफ गॉड, वायलेशन इन द नाम ऑफ गॉड हो रहा है, ये सब के सब अगर सही मायने में हम धर्म को समझ जाएंगे,
धर्म का बेस क्या है? धर्म संस्कृत का वर्ड द्रि से आया है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धारण क्या करना है? वो लॉ, वो नियम, जिस नियम से ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। तो वो नियम क्या है? यूनिवर्स में, नेचर में किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंसान अगर सही मायने में धर्म को अडॉप्ट करे, धर्म को समझे, रिलीजन को समझे, तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं, शायद किसी और प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे होते। तो मेरा यही इतना ही, इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर यही। थैंक यू। थैंक यू हरपाल जी। आपने सही कहा कि वी हैव टू reunite with the God and have to reunite within us also. Thank you for your words, and I would now request Reverend Burgess Thomas to throw some light on the question. Okay, namaskar. It's a great privilege for me to be with all of you. Thank you so much for Spare India, as well as World Vision and UNESCO, and all other my dearest and beloved colleagues, those who are representing us on various religious groups and various community. I would like to say that in the past, almost past 2 years, we were very much compelled and forced under the pandemic period, and this COVID-19 affected to everybody. As our Harpal Singh said, COVID has no religion. That's true. COVID reached to everybody's house, and without any kind of discrimination, it has gone to everyone. Since whether it is a human being mistakes or whatever the mistakes we could say, the COVID is already there, and we have come to know that even recently that new phase or a new what do you call it? New phase is coming up, and the government of Delhi is given a strict warning that you should wear the mask, and without wearing the mask, if anyone found, they will be charged with the 500 rupees and all. So what is my experience in the past 2 years? What I could say that I belong to a church, but as a community leader, as a faith leader, we work for everyone. We work for human being. And what we have noticed that we come across with a lot of patients, lot of people who were affected with the COVID. We came across with them, and we tried to provide the oxygen cylinders and masks, and even try to give the sanitizing, the liquids and all. We also distributed so many things. But even in the church, we were gathering very little people. I mean, like 25, 50 small gathering we used to have. But as we have spoken, our brother has said, our work has not stopped. That's the truth. I mean, though there were a lot of restriction and troubles, we were having a lot of online meetings and all. That's still going on, and it will continue. There is no doubt about that. So as dear Sister Nishant said, we can also distribute a lot of masks as well as sanitation providence. Even in the church, what we did it, we kept the chairs 1 meter distance, and we also were trying to greet to one another, not by shaking hands, but at least to fold the hands and namaste. So that was giving a kind of a greetings to one another, keeping a distance, and we encourage people to follow the protocol of what the government of India as well as the medical health and hygienic groups were giving. So we very much encouraging people to follow such kind of norms, such kind of protocol, what is given among two human beings, so that we may have a less effect to the community, and we may save the people from their destruction or this kind of problems. May God bless all of you. Thank you so much. I will look for the next questions. Thank you, Reverend. It was good you shared your thoughts again among us, and rightly said that there's a lot of work
yet to be done. And I would now request Mr. Naveen Dugar to throw some light on the question. Good afternoon, everybody. I feel very privileged to be a part of this panel, and I would like to thank World Vision, Spare India and UNICEF for inducting me in this panel. मुझे ऐसा लगता है कि I am too young, my journey is too young as a social worker. बाकी जितने भी लोगों को मैंने सुना तो I am really very pleased कि लोग कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छी बातें शेयर की ऑलरेडी, अपनी इनसाइट्स दी कोविड से लेकर. सो आई विल नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दैट, रादर मैं थोड़ा सा अपना एक पर्सनल इंसाइट शेयर करना चाहूँगा. एक सर्वधर्म प्लेटफॉर्म है तो उस पर एक मेरा पर्सनल इंसाइट है, मेरा अपनी एक पर्सनल बिलीफ है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. सो फॉर मी द बिगेस्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी. बाय बर्थ आई एम जैन, बट बाय चॉइस आई एम ह्यूमन बीइंग, और मैं इंसानों से प्रेम करता हूँ. और ये हमने कोविड के दौरान बहुत क्लोजली महसूस किया. लोगों की मजबूरियों को देखा, लोगों को तड़पते हुए देखा. जेब में कितने भी पैसे हैं, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हैं, एक एक इंजेक्शन के लिए जो 3,000 का इंजेक्शन 30,000 50,000 में लोगों को तड़पते हुए देखा. अपनों को बचाने के लिए मतलब गुहार लगाते हुए लोगों को देखा. मेरे पास मेरा नंबर बहुत सर्कुलेट हो गया था कोविड के दौरान. So I used to get calls from DIGs and DCPs and people from Enforcement Directorate. I used to get calls from Menka ji's office and from so many politicians also. उनके PS मुझे कॉल कर रहे थे for injections. So I was so surprised कि ऐसी स्थिति unbelievable, जो लोगों की मिलने के लिए शायद बाहर लोग क्यू में बैठे होते होंगे, आज उनके PS एक एक इंजेक्शन के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, दवाइयों के लिए इतने परेशान हो रहे हैं. तो मुझे लगता है ये वर्स्ट टाइम था ह्यूमैनिटी के लिए. जो बुरे लोग थे उनकी बुराई अपनी पीक पे थी, बट थैंकफुली अच्छे लोगों की अच्छाई भी अपने पीक पे थी. और बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को हेल्प किया, लोगों की मदद की, बहुत सारी जानें बची. सो आई थैंक ऑलमाइटी जिन्होंने हमें थोड़ी सी क्षमता दी कि हम लोगों की मदद कर पाए. एज अ सोशल वर्कर मैंने अपनी लाइफ में शायद कोविड के दौरान ही कुछ अच्छा काम किया है. मेरी वाइफ NGO तो नहीं चलाती, बट शी टीचर्स अंडर प्रिविलेज किड्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज अ स्मॉल सर्विस. मुझे लगता है कि अपना समय देना सबसे बड़ी सर्विस है. पैसा तो कोई भी दे सकता है, बट अपना पर्सनल समय किसी की मदद के लिए दे पाना, आई थिंक इट इज समथिंग रियली अमेजिंग. ऑल्सो एक छोटा सा दोहा है कबीर दास जी का, विच आई वुड लाइक टू कोट. उन्होंने कहा है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक. यानी कि अल्टीमेटली देयर इज वन सुप्रीम पावर. तो इसीलिए मैंने अपना जो संबोधन है किसी सैल्यूटेशन से शुरू नहीं किया. मैंने सिंपली अपनी बात स्टार्ट करी, क्योंकि हम सबके रिलीजन में अलग अलग सैल्यूटेशन है. तो मैं एक छोटा सा और क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स एक बैकग्राउंड अपना दे देता हूं कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं. तो आवर फादर इन हेवन होली बी योर नेम वाज माय प्रेयर एवरी डे फॉर 16 years, and I visited churches and chapels all my life in my young days, and I was really influenced by my teachers, my nuns and sisters. बचपन से ही मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स मुस्लिम्स और सिख्स रहे हैं. मेरा बचपन का जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, 40 साल पुरानी मेरी दोस्ती, ही इज अ हिंदू. आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 2 मुस्लिम बच्चों को हायर किया रिसेंटली, and they are my pillar of strength, and I'm really very happy to have them with me. Also हमारे साथ बुद्धिस्ट पैनल से भी हैं. तो बुद्धिज्म और जैनिज्म तो गो हैंड इन हैंड, दोनों का अहिंसा परमो धर्म एक ही मोटो है. और ब्रह्म कुमारी आश्रम तो हमारे लिए इतना बड़ा एक प्रिविलेज का एक रहा है कि मेरी जो पहली ऑफिस थी, मेरे ऑफिस के ठीक ऊपर ब्रह्म कुमारी आश्रम था. और बहनें मुझे हमेशा कहती थी कि आपके सिर के ऊपर तो शिव गंगा बहती है, सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट. और दैट्स ऑल. मतलब मैं इसी बात से अपना संबोधन समाप्त करना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन में सभी धर्मों को बहुत नजदीक से देखा है. मैं रेगुलरली गुरुद्वारों में जाता हूं, मैंने जामा मस्जिद में भी बहुत बार शिरकत की है. और मुझे यही लगता है कि धर्म को हम फसाद की जड़ ना बनाएं, और धर्म की ताकत को समझें. और जितने भी यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि एकता, प्यार और ह्यूमैनिटी, इन 3 चीजों पे हम सब मिलकर अगर वर्क करें तो कोविड क्या बड़ी से बड़ी महामारी से भी हम लड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
धन्यवाद नवीन जी, बहुत सही कहा आपने कि सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का धर्म है एंड आपके चरित्र से हमको दिखाई भी देता है। धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा नवांग सोनम जी को कि वो अपने विचार को व्यक्त करें। एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट नवांग सोनम टू share his thoughts. First of all, can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So first of all, I would like to thank Spare India for having me here, and I'm also happy that this kind of interfaith discussion where we are speaking about our responses to the crisis, particularly this pandemic, is happening. So I'm very happy to be part of that. And before I answer this question, I would like to thank the Indian government, all those front runners, the doctors, the scientists who have all worked hard to make their vaccination, homemade vaccination, available to all the Indians, and also to those who are also in India, particularly the Tibetan community. So we are very grateful for that. Now, having said that, now my response to this question is basically, what advice would you like to give to followers to gather, pray, and practice faith during post-pandemic times? That's one part of the question. And the second one is about preventing social stigmatization and discrimination. As far as the first one is concerned, when it comes to prayer, either you can pray individually or as a community. So if praying as a community is not good for, could be detrimental to our public health and also individual health, then I would really advise people, because prayer means it's a connection between you and your God. So you don't really need to come as a community to pray. You can pray individually. Now, as for the second part about social stigmatization and discrimination, so I would like to say a few things from a Buddhist perspective as far as stigmatization and discrimination is concerned. In Buddhism, particularly in Mahayana Buddhism, the concept of compassion, loving kindness for others is very, very strong. The reason is because most of our negative thoughts arises from selfishness. Too much emphasis on one's own personal agenda, well-being, is actually not good for oneself. And then the reason behind the practice of compassion is that we are all interdependent. Nobody is able to live their life on their own from the beginning. From the beginning, we are dependent on mother's compassion, kindness, without which we would not have survived at all. And then in the middle of our life, no matter how much we think we are capable, we always depend on others' kindness somehow, whether it's intentional or unintentional. Somehow, the role of other individuals in one's life is undeniable, unquestionable. For example, when you look at me, the clothes that I am wearing, and the spectacle that I'm wearing, the earbuds and the cell phone, everything actually has a role of many, many individuals. So in GIST, the role of community is something indispensable for our survival. Community consists of all ranges of beings, particularly humanity. So therefore, it's important that if you really want to be part of a proper society, then you cannot divide people on the basis of religion, on the basis of gender, on the basis of material facilities they might have. So all those discriminations on a social level is not good at all. And individually, if you have this kind of discriminative mentality, you'll never enjoy a proper life because you always have problems associating with people. So as a Buddhist, we believe in the law of karma. We believe in reincarnation, rebirth. So the Buddhist concept is that although you have one set of parents in this life, every sentient being that you see around, whether they are animals, whether they are human beings, whoever, they have all been your mother multiple times in the past and will also be your mother
multiple times in the future. So it's just a matter of whether you can remember their kindness or not. So that is one reason. Another thing is we all want to be cherished. Everybody, for everyone, they themselves are very important. So if you are in a society and if everyone prioritizes themselves, then we are not going to have a community, proper community where we can work together. So therefore, the concept of interdependence and also sense of concern for others, this is very important as a society. So if you discriminate, socially, you will not be able to function properly. Individually, you will never be happy. So this is commonsensical. It's not just a Buddhist idea, it's commonsensical. These religious ideas, these actually came because these are good for the society. So therefore, my emphasis is stigmatization, discrimination is neither good for the individuals and also not good for the society. So use the concept of interdependence, and then you will see, and then also treat others the way you want to be treated. So with this, I don't want to take further time, and I will wait for the next question. Thank you. Thank you, sir, for your thoughts. Rightly said that prayer is a connection between a person and a God, and you should not discriminate anybody. Thank you, sir. Thank you very much. I would now move on to the next question. My next question is, how can we prepare better for effective humanitarian action post-emergency and disaster while fostering positive outlook among the society? मैं इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ना चाहूंगा। हम समुदाय के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए आपदा स्थिति और आपदाओं के बाद प्रभावी मानवीय कार्यों के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? और मैं गुजारिश करूंगा ब्रह्मा कुमारी समाज से बहन सुजाता जी से कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। ओम शांति। अभी आप सभी के विचार सुने, बहुत सीखने को मिला और बहुत सही कहा आप सभी ने। और जो हम अनुभव करते हैं, जो हम रोज सीखते हैं और जो हमने प्रैक्टिकली आपातकालीन में मतलब इस कोविड के समय में जो सेवाएं की है और खुद भी हम लोगों ने जो कार्य किया है वो हम जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग रोज मेडिटेशन करते हैं। मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे से जगते हैं खुशी से, बहुत अच्छा लगता है। वो समय बहुत सात्विक और शुद्ध होता है। तो कोविड के दौरान भी हम उठ करके सुप्रीम सत्ता के साथ, ऑलमाइटी के साथ अपने दिल का रिश्ता, मन का, आत्मा का रिश्ता जोड़ते थे और बहुत दिल से सुंदर और प्योर और पावरफुल थॉट्स को अंदर से क्रिएट करते थे और अपना ओरा ऐसा क्लीन करके पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाते रहते थे। सबके कल्याण की, सबको जीवन दान मिले, सब निरोगी रहे, उसकी प्रार्थना तो करते थे। साथ में जितने लोग हमारे कनेक्शन में थे उतने सब लोग और जिन जिन परिवारों में इस तरह की स्थिति बनी थी कि सारे के सारे ही कोविड पेशेंट बने थे, तो हम बहनें ग्रुप बनाकर, किसी के जरिए नहीं, हम ग्रुप बनाकर सेंटर में ही मतलब अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ही बहुत ही अच्छे बहुत सकारात्मक थॉट वाले सॉन्ग्स लगाते थे, गीत लगाते थे। प्रभु सुमिरन में हम खुद बहुत सात्विकता के साथ खुशी से भोजन बनाते थे, क्योंकि हमने ये सीखा भी है, सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों से सीखा है और अनुभव किया है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा जीवन बनेगा। और हमारी सोच से, हमारी वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साइंस है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। और जब हमने ऐसा वातावरण देखा तो बहुत से परिवारों में हम पूरे 1-2 महीने तक, पूरे 3-3 टाइम तक भोजन बनाकर बहुत प्यार से हम भेजते रहे, वो भी सात्विक भोजन। ऐसे ही जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू है, वहां पर 2-3 बिल्डिंग्स कोविड पेशेंट्स के लिए ही कोविड सेंटर के रूप में परिवर्तित की गई थी और चारों तरफ बहुत स्वच्छता, सात्विकता, शांति, और वहाँ के जो डिवोटेड भाई बहन है वो बगैर डरे, बगैर कोई भेदभाव किए
सीधा पूरी प्रिकॉशन के साथ सारे पेशेंट्स के पास जाते थे, उनको भोजन खिलाते थे, देते थे और मेडिटेशन भी सिखाते थे स्पीकर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, अच्छे अच्छे गीत लगाते थे, बीच बीच में उनको खुशी में लाते थे दुखों को भुलाकर, कभी उनको डांस कराते थे, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा करके, देशभक्ति के सॉन्ग्स लगा करके, और सात्विक भोजन तो मिलता ही था, मेडिटेशन सिखाते थे, एक्सरसाइज सिखाते थे। तो हम पूरी कोशिश करते थे कि जो कुछ बीत रहा है उनके साथ वो भूल जाएं और कुछ अच्छे विचारों के साथ उस सारे वायुमंडल को परिवर्तन किया जाए। और ये सब हमने प्रैक्टिकली देखा और ये रिकॉर्ड रहा सेंटर्स का। और माउंट आबू में जितने भी कोविड पेशेंट्स आए, कोई भी पेशेंट्स की मृत्यु नहीं हुई और सभी ठीक होकर के, बहुत जल्दी ठीक होकर के अपने अपने स्थान पर सुरक्षित उनको पहुंचा दिया गया। हमारा कहने का भाव ये है कि समाज में जो कुछ हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ जैसे होने का दिख रहा है दिनों दिन, जैसे पूरा समाज, पूरा संसार और आप जैसे जो फेथ लीडर है, जो समाज सेवक है, और आपके अंदर जो पवित्रता और निस्वार्थ सेवा है, उसके कारण शायद यह संसार अभी भी टिका हुआ है। अगर आप जैसे ऐसे प्योर थॉट्स रखने वाले और सेवा करने वाले लोग ना हो तो पता नहीं संसार का क्या हो जाता। तो अभी भी हमारे पास पुण्य कर्म संचित है, अच्छे कर्मों का बल है हमारे पास अभी, जिसकी वजह से हम सभी अभी भी कुछ अच्छा समय देख पाते। और अभी भी जैसे सुनने में आ रहा है कि चौथी लहर आ रही, और जैसे आपने कहा कि अब हम क्या करें, सकारात्मकता को बढ़ावा भी हम देते रहे और अपना कार्य हम और भी आगे निस्वार्थ भावना से करते रहे, उसकी क्या तैयारी है। तो हम सब रोज यही तैयारी करते। सबसे बड़ी तैयारी है किसी का भी मनोबल क्षीण नहीं होना चाहिए। शरीर बीमार हो जाता है और साथ साथ मन भी बीमार हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। मन अगर हमेशा शक्तिशाली रहे, खुश रहे, हमें यहाँ सिखाया जाता है कि शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मरीज नहीं, हम ये प्रैक्टिकली सीखते हैं और इसको प्रैक्टिकल करते भी हैं। हमने अनेकों ऐसे मेडिटेशन सीखने वाले विद्यार्थियों को देखा है, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन वो उन परिस्थितियों से अपने आप को इस तरह से पार कर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ज्ञान से हमारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम पॉजिटिव बातें लोगों से करने जाते, जैसे कि आप सभी ने अपने अनुभव शेयर किए, तो ऐसे हम भी महाराष्ट्र में एक गांव में गए जिसमें एक गांव के 35 लोगों ने सेकेंड कोविड के समय में शरीर छोड़ा, मृत्यु हुई उनकी, और एक एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों ने शरीर छोड़ा। और जब हम ऐसे ऐसे परिवारों को मिलने गए तो उनकी तैयारी नहीं थी कि वो कोई अच्छी बात सुने, वो कोई बस दुखी हो रहे, कोई बस अपने जैसे कि भगवान को दोष दे रहे, कोई डॉक्टरों को दोष दे रहे, कोई और किसी को, मतलब कंप्लेंट्स शिकायतें भी करने वाले लोग मिले। और वो सुनने की शक्ति नहीं थी, शांत बैठने की शक्ति नहीं थी, मेडिटेशन की, भगवान की, कर्म की कोई बात नहीं सुनते थे। तो ऐसे समय पे क्या करें? तो हमने देखा हमारी बहुत सी ऐसी दीदियां हैं और हम लोगों ने भी ये किया कि अगर आप लंबे समय से आप स्वयं बहुत प्योर वाइब्रेशंस में रहते हैं, भगवान की याद में भी रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और ऐसे समय पे जब लोगों में सुनने की शक्ति नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि उस वक्त वो अपने दुख के इतने वश होते हैं, जो उनका नुकसान हुआ, परिवार के जो उनके प्रिय सदस्य चले गए उनको छोड़कर, तन मन धन और जन चारों प्रकार का जिनकी क्षति हुई, तो उस वक्त तो कुछ नहीं सुनते हैं। तो क्या करें? तो हमने देखा कि जब आप लगातार उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहते हैं और साथ साथ आप अपने प्यार से कुछ न कुछ उनके साथ बात करते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी उनकी मदद करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें वो शक्ति आ जाती है, वो अपने आप को संभाल लेते हैं। तो हम सभी को ही कर्म की गहन गति का ज्ञान, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अगर यह ज्ञान न हो
तो भी व्यक्ति बार बार कहता है क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो हमने देखा कि कई लोगों ने जो नियम बने हुए थे कोविड को लेकर उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। मास्क कभी उतारा नहीं, सैनिटाइज किए बगैर उन्हें कोई काम किया नहीं, और बहुत नियम फॉलो करने पर भी जब उनको कोविड हुआ और कोविड होने के बाद जब उनके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उनका तो इन नियमों से भी विश्वास उठ गया। वो कहने लगे ये सब काम की बातें तो है ही नहीं। तो इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। तो हम अभी यही तैयारी कर रहे हैं और हम प्रैक्टिकल अभी अपनी क्लासों में भी सुबह शाम दोपहर जो गैदरिंग आती रहती है और हम जगह जगह पर भी जब जाते हैं तो मेडिटेशन के साथ साथ सबकी ऐसी तैयारी कराते, जैसे देशभक्त अपनी देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर खड़ा होता है तो कफन ओढ़ के खड़ा होता है और बहुत खुशी से अपने देश की रक्षा के लिए वो सेवा में तत्पर रहता है, उसको डर ही नहीं रहता मृत्यु का। तो हम भी यहाँ सीखते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा अमर है और आत्मा के साथ उसका किया हुआ सेवा का पुण्य कर्म जाता है। इसलिए अपने जीते जी हम सबका भला करें, सबके साथ अच्छा करें और पॉजिटिव रहे और हर किसी की सेवा करें और अपने आप को हम समर्पणता के साथ, त्याग और तपस्या के साथ समाज को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मनोबल को बहुत ही सात्विक बनाएं, बहुत ही शक्तिशाली बनाएं। और उसके लिए हम लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज एक एक घंटा बैठ करके बार बार श्रेष्ठ बातों का चिंतन करते हैं और दवाई और दुआएं दोनों का हमें बैलेंस रखना है। जैसे कहा जाता है साइंस और साइलेंस, तो हम यहाँ सीखते हैं जैसे एक छोटे से बच्चे को एक बार खिलौना न दो तो रो पड़ता है, लेकिन अगर उसको अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए हम अपने अंदर अच्छे संस्कार भरें और सभी को अच्छे संस्कार दें, जिससे अच्छे संस्कार से अच्छा संसार बन सके। तो हम सभी यही तैयारी करते हैं और सबका मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपके सुंदर विचार के लिए। सचमुच में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है और आगे बढ़ना है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा निस्बत हाशमी जी को कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। सर, इफ यू डोंट माइंड कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एक्चुअली मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो गया था। जी जरूर, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। हाउ कैन वी प्रिपेयर बेटर फॉर इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन एक्शन पोस्ट इमरजेंसी एंड डिजास्टर व्हाइल फॉस्टरिंग पॉजिटिव आउटलुक अमंग द कम्युनिटी? हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। हम समुदाय के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए आपदा स्थिति और आपदाओं के बाद प्रभावी मानवीय कार्यों के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग द क्वेश्चन। सर, जैसे कि क्योंकि ये फोर्थ वेव है, फर्स्ट वेव जो थी सबको पता है कि फर्स्ट वेव में कोई भी प्रिपेयर नहीं था। इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि क्या कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, और जिसको जो समझ आ रहा था, जिसको जैसे ठीक लग रहा था बस वो कर रहा था। बट सेकेंड पेंडेमिक में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में हमें देखा कि काफी लोग प्रिपेयर थे, डॉक्टर्स को भी पता था, गाइडलाइंस भी प्रॉपर थी, ट्रीटमेंट और मेडिसिन की लाइंस एकदम प्रॉपर थी। तो जैसे एक्सपीरियंस आते आते इंसान एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से प्रिपेयर हैं कि अगर अब वो ऊपर वाला ना करे कि फोर्थ वेव बहुत ज्यादा आए या बहुत डेंजरस हो या लोगों को बहुत हार्म करे या डेथ रेशो बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि हमें लगता है कि अब हम ज्यादा प्रिपेयर हैं रादर देन प्रीवियस ईयर्स, अब हम अगर ऐसा कुछ होता है पोस्ट पेंडेमिक तो हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि हमारे पास सारी प्रिपरेशन है, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल्स रेडी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए बहुत सारे लोग फ्रंट लाइन में तैयार हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं जो काफी एक्टिव रहे हैं और डॉक्टर्स हैं जो अलाइंड हैं। हम अपनी तरफ से एज ए सोशल एक्टिविस्ट और फेथ लीडर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लोगों को पॉजिटिव रखें। मुझे ब्रह्मा कुमारी जी की बातें और उनके विचार बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट लगे, बहुत अच्छे लगे कि मेन जो होता है इंसान के लिए वो पॉजिटिविटी ही होती है।
मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो या डिजीजेस ना हो या कोई ऐसी समस्या ना हो जिसका समाधान नहीं है। बस जरूरत है तो हमें वो व्यूज क्रिएट करने की, वो पॉजिटिव व्यूज बनाने की, वो कॉन्फिडेंस देने की लोगों को कि जो भी होगा या जो होने वाला है हम उसके लिए तैयार हैं। और बाकी नेचर से हम लड़ नहीं सकते, जो ऊपर वाले को करना होगा वो करेगा, लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे कदम, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। और अभी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है लोगों को अवेयर करना कि वो जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, हैंड शेक ना करें, सैनिटाइजर लगातार इनकी क्वेश्चन में। जी कंटिन्यू करिए। और जो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है कोविड की, जब लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे, हम उसी स्टेज पे उनको हमारे पास काफी सारी अरेंजमेंट्स हैं। हम उन्हें मेडिकेशंस, जब उनको कफ स्टार्ट होता है या निमोनिया वगैरह स्टार्ट होता है, तभी हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम लोग तैयार हैं। बाकी दुआ ही, जैसे मैम ने कहा, दुआ और दवा दोनों ही चाहिए, तो दुआ की जरूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू निष्पत जी, सचमुच में दुआ और दवा की ही जरूरत है और सकारात्मक सोच को भी हमें आगे बढ़ावा देना है। थैंक यू आपके इस विचारों के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा हरिंदर पाल सिंह जी को कि वो भी अपने विचारों को व्यक्त करें। जी थैंक यू। मेरा सबसे पहला कंसर्न ये है कि आज जो है ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड टुडे। मैं अपनी जनरेशन के बारे में कहूँ तो और जनरेशन born in conflicts, brought up in conflicts, living in conflicts, and perhaps will die in conflicts. तो बड़ा इसमें जरूरत है समझने की, या मैं कह लूं कि in reality the 21st century might create the most unequal societies, and globalization and technology bridge the gap between countries but enlarge the rift between classes. देखिए, every conversation we have in our society is about religion. Every conversation is about differences. Every time we just be taught hate. और जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, तो वी शुड लर्न व्हाट वी आर डूइंग टू मेक द होल वर्ल्ड बेटर प्लेस। देखिए, कोई धर्म, किसी धर्म में वायलेंस की बात नहीं है। Every single religion talks of love, brotherhood, peace, but ironically, past 2 decades have witnessed violence, hatred, bias, mob lynching in the name of religion. ये भी मैंने पहले क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि religion is to unite mankind, not to divide. It's for sharing value system. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मस्ट कम फॉरवर्ड, नॉट जस्ट फॉर देयर ओन कम्युनिटी ओनली बट फॉर अदर्स टू, लाइक गुरुद्वारास अरेंज्ड फूड एंड लंगर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर इन कोविड एंड फॉर ऑल. Government cannot work alone. We as fellow humans need to be more accountable. As far as to adopt the, I was reading your questionnaire, तो किसी ने लिखा था कि अब हमें न्यू वे ऑफ लिविंग देखनी पड़ेगी। तो उसमें मैं कहता हूं कि we must that human have bodies. Technology and artificial intelligence has been distancing us from our bodies. How can we live happily if we are disconnected with our bodies? If we don't feel at home in our body, we will never feel at home in the world. So best solution for improving discourse may come from getting to know each other as whole people instead of just opinions. I will talk about Guru Granth Sahib Ji because I am a student of and follower of Guru Granth Sahib.
तो गुरु ग्रंथ साहब फिलोसफी और मैं कह लूं इनके सिद्धांत कह लूं, उसका मैसेज इज टू नो ट्रुथ अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ and about one's own identity. And you can observe reality with clarity if you really know the truth about yourself. देखो आज दुनिया में एक नई टर्म डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी या पॉजिटिव थिंकिंग, कि इंसान की लाइफ को वर्दी कैसे बनाना है, इंसान की लाइफ को पर्पसफुल कैसे बनाना है। तो मैं पढ़ रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि हु इज ए हेल्दी मैन, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और वीकनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमोशंस फिजिकली भी ठीक हो, इमोशनली भी ही शुड बी ऑल राइट, सोशल भी, ये सब मस्ट फंक्शन टूगेदर, और स्पिरिचुअलिटी इज एसेंशियल। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को, और ये जो है उसमें जो एक पूरा हेल्दी मैन बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो क्या है? लर्निंग एंड ग्रोइंग। सोशल डेवलपमेंट मीन वन इज एबल टू हैंडल ऑल रिलेशंस। वो रिलेशंस चाहे फैमिली के हों, चाहे सोशल लाइफ के हों, चाहे प्रोफेशनली हो, तो उसमें जो है ये सोशल डेवलपमेंट है। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसकी मुझे बार बार मैं जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूं कि स्पिरिचुअल डिविनिटी क्या, डिविनिटी विद इन, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स जो है वो पैदा होगी। देखिए जीवन जो लाइफ है एक एनर्जी है। ये एनर्जी के दो आयाम होते हैं, एक एग्जिस्टेंस है, एक नॉन एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस के फिर दो आयाम हैं, वन इज अनकॉन्शियस, सेकंड इज कॉन्शियस, चेतन और अचेतन। फिर कॉन्शियस के दो आयाम हैं, वन इज सेल्फ कॉन्शियस, सेकंड इज सेल्फ अनकॉन्शियस। अपने प्रति जानना, अपने प्रति चेतना रखना, अपनी आइडेंटिटी का पता होना, ये तो हो गया सेल्फ कॉन्शियस। और दूसरा जिसे अपने प्रति कुछ भी पता नहीं है, वो सेल्फ अनकॉन्शियस। यही फर्क है इंसान में और जानवरों में। इंसान क्रोध करता है, नफरत करता है, वायलेंस करता है, वासना में रुचित रहता है, ये उसके कर्म नहीं है, ये सेल्फ अनकॉन्शियसनेस है, सवे अचेतना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल होना, परमात्मा में विश्वास होना, परमात्मा के जो रिलीजियस हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको फॉलो करना इज नॉट एनफ। रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन फॉलो इट, प्रैक्टिस, अमल में आना चाहिए। यू सी, आप जब पढ़ते हैं कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, होली स्क्रिप्चर, इवन आई से हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो तीन जो नियम हमेशा ध्यान रखें, रीड द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रीड बिहाइंड द लाइन। जैसे एक गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि निवास सोई जो न्याओ बिचारे। ये एक जो है वो मुसलमान को संबोधित हो रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब, कि तू किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके साथ जस्टिस कर दे, तेरी नमाज हो गई। तो ये सबको कह रहे हैं, मेरा पाठ हो गया। हिंदू का जो है वो गायत्री मंत्र हो गया कि जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको साथ जस्टिस करना है। तो मुझे लगता है कि एक तो स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और सेकंड, डिफरेंट ग्रुप्स और एनजीओज मस्ट बी इन रेगुलर टच, एंड रेजिडेंट्स ऑफ ईच कॉलोनी जो RWA होते हैं नीड टू बी प्रोएक्टिव। कम्युनिकेशन मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल लेवल्स। Senior citizens, single people, disabled suffer the most. Hence, we all must join together and use social media effect to create space for all. जो religious institutions हैं, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम अपने घरों में भी देख रहे हैं कि जो हमारी जनरेशन है, वो जो
बाहर का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के साथ वो जनरेशन भी हमारी उसको फॉलो कर रही है. यू क्रिएट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विल डू द जॉब. तो मेरे को तो यही इस सवाल का लगता है कि हर इंसान को इंसान बनाना, जैसे कि सिखिज्म में है कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो, या अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हरिंदर जी, थैंक यू वेरी मच आपके सुंदर विचारों के लिए. सही में आपने कहा कि सब धर्मों का जो है कि सद्भावना और प्रेम को बांटने का संदेश मिलता है सभी धर्मों से. धन्यवाद इस सुंदर विचारों के लिए. अब मैं गुजारिश करूंगा रेवरेंड वर्गीस थॉमस से कि वो भी अपने विचारों को व्यक्त करें, और मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट रखें क्योंकि समय का को भी हमें ध्यान देना है. Okay, very good. Thank you so much. We have heard a lot about the things what we can do. As the questioner is here, we prepare better for effective humanitarian action for the post-emergencies. So what I suggest, my idea is that these days it is better to reach the community with awareness, and even as a community leader or faith workers, faith leaders, we can even approach to the community irrespective of caste, creed, religion, and these awarenesses can be made. And also even in the churches, we of course we used to pray with them, we encourage them, and even if anyone affected with COVID and or any kind of sickness, we go there and encourage people and comfort them, and also we pray for them, because ultimately we totally believe in God and his power, his divine power. And also more or less the word of God, the Bible, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And the second commandment is, the second one is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So since we keep this commandment, and as we follow the teaching of Jesus, of course, we consider the human being and as a very much our neighbor, and we try to help one another. And in this day also, as we are doing, and we will continue to do the service to the human being, and there is no doubt about that. As for the kids and all, those who children are going to school, there are many children, they have not gone to schools in the last 2 years. So we select those children and try to reach to them and try to give them many opportunity to school or giving the admissions in the schools. And also we encourage people, those who doing the online studies and all, if they are poor, we try to, or we want to people to come forward and assist these people by providing the electronic gadgets and all. So these are the things, even also assisting poor, elderly, as well as the women, by giving the awareness, as well as teaching them how we can immediately take the actions or immediately the first aid provisions how can be made to any victim or anybody. So this is one of the way we can look for the better community, better people, better future. So I believe that there will be pandemic, there will be some kind of this kind of sicknesses will be there. So we have to prepare people and their mind as well as their knowledge, so that people may get ready to face all kind of these situations. Thank you. Thank you, Reverend, for the wonderful thoughts, and rightly said that the biggest commandment is कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. Thank you for your words, and I would now request Mr. Nawang Sonam to share his thought, as because Mr. Naveen Dugar is not with us, and he had to leave, had some prior appointments. So I would request now Nawang Sonam ji to share his thoughts.
Can you hear me? Yes, sir. All right. So the question is, how can we prepare better for effective humanitarian action, post-emergencies and disasters while fostering positive outlook among the community? The first, I would like to focus on maintaining a positive outlook among the community. So one of the most important thing, if you want to really display a positive outlook in the society, is those who are responsible, those who have responsibilities and are active in the society should conduct everything transparently, including financial management. There's a lot of financial mismanagement during the pandemics. At the same time, I'm not very sure, but if words are to be believed, then many people who were materially poor, financially poor, were actually taken advantage of in the hospitals. There was no transparency. Many have lost their loved ones with no transparency, no accountability. So India is a very democratic country. It is governed by law and order. So we have to make sure that everyone is treated equally in the face of law. That's transparency, sincerity. If you're sincere, you don't have anything to hide. If there is something to hide, then you are not transparent. So transparency, if that is there, then you can really create what is called as positive outlook among the community, because when people see what you are doing, and if everything is done transparently, then they will really develop faith in you, and then there's a sense of community, hope. Otherwise, if you do things discreetly, surreptitiously, then it's very difficult to gain the respect and also trust of people. So that is something important. Then on a personal level, maintaining a positive outlook is, Buddhism doesn't really believe in creator or God as a creator, but we have that concept of karma. So whether it's a religion that believes in creator or a God or the mighty God, or another religion that believes in the law of karma, the concept is the same. The idea behind it is the same, that you are answerable to your actions. You are accountable to your actions. That is the concept. So in short, law of cause and effect, just as we have action and reaction in science, the law of cause and effect, when it's applied to the feelings, one's own experiences as sentient being, then that's karma from Buddhist perspective. So therefore, accountability, if you have a sense of accountability, then naturally you will not do anything that is against your religious belief, that is against humanity, that is not good for others. What is not good for you is also not good for others. So you try to treat others equally as you want to be treated. So therefore, if you have that sense of accountability, then you can always take this consolation in your heart that so far, while I have lived meaningfully. So whether death occurs to me or not, if something bad happens to me or not, doesn't matter. The enlightened beings, the gods, or the supreme creators, they all have the knowledge of what I am doing, what I have not been doing. And so therefore you can think of them as seeing your day-to-day activities and be true to your dharma, whatever, true to your own religious precept. If you have that kind of mentality, then whether you live or not, eventually we are all going to die. So you can live in peace mentally, that I have done everything as I should according to my religion. So if that comes to me, doesn't matter, there's nothing to fear. If I live, again, I will live meaningfully. So with that kind of mental attitude, I think you can foster a real good outlook on yourself.
And then second part that I want to highlight a little bit is as Buddhist community, for example, our monasteries in South India, we have several monasteries, 8 monasteries in Mongol area and several monasteries in Mysore area. So these monasteries have been active in distributing food rations to the needy ones and also being helpful whenever needed. And also in North India, in Dharamsala, we also have monasteries and nunneries. They have equally taken part in trying to be helpful socially, whether it's distributing food or whether it's sponsoring vaccination and so forth. So therefore, so from our Buddhist communities, not only we also have tried to do our own bits. And as Tibetan communities, we also have collected donations to be donated to the Prime Minister's fund to counter this pandemic. So this is all for today, for the second question. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful thoughts. And looking at the time and समय को देखते हुए हम मद्देनजर रखते हुए we can continue the third question, but I'd request the participant to kindly respond in under 1 minute if possible. Okay, then we'll move on to the third question, and I would request the panelists to just respond in 1 minute. So my third question is promoting leadership qualities of the responders and the service providers and building capacity in social care and support, gender-based violence, promoting resilience in the community. So I would now request Sister Sujata to share her thought in 1 minute. ओम शांति। जो थर्ड क्वेश्चन है उसी पर ही हम सभी निरंतर कार्यरत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से जो ये हमारा सेवाएं चलती हैं, ये 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था इसी विषय पे कार्य करती है कि हम जातिवाद, स्त्री पुरुष का भेद और जो भी कोई हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करने वाले हैं, उनके अंदर भी आगे वो कार्य अच्छा करते रहे, उसके लिए वो पॉजिटिविटी भरना, मनोबल भरना, उनको अप्रिशिएट करना, उनका सम्मान करना, उनको धन्यवाद करना, और वो जो भी कोई कार्य कर रहे हैं अच्छा, उनके साथ हम सहयोगी बनते हैं। उनको जिस भी साधन की, जिस भी बात की, जिस भी चीज की जरूरत है वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत है, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं लेकिन धन नहीं है। किसी के पास धन है लेकिन वो सेवा करना चाहते लेकिन आइडिया देने वाला नहीं है। तो कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो हम सभी मिलकर के ऐसे ऐसे कार्य करने वालों को हम हर प्रकार के सहयोगी बनकर साथ देकर आगे बढ़े और बढ़ाएं। और बात है स्त्री पुरुष की हिंसा। पहली बात है कि हम यहाँ सीखते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। हिंसा जो है सबसे बड़ा अधर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो हम सब भाई भाई हैं, लेकिन आत्मा का धर्म तो शांति है, आत्मा का धर्म तो प्रेम है। तो जातिवाद अगर हमें खत्म करना है तो जैसे भाई साहब ने पहले बोला कि सेल्फ रियलाइजेशन, हमें सबसे पहले बार बार ये ज्ञान होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ये दिखाई देने वाली बॉडी नहीं, इस बॉडी को चलाने वाली एक पावर, एक एनर्जी, एक लाइट है जिसको हम चेतनता कहते हैं, एक चैतन्य सत्ता है। तो जब मैं भी सोल, आप भी सोल, मैं भी प्योर, आप भी प्योर, तो कैसे कौन स्त्री और कौन पुरुष? ठीक है, हम इस संसार में आए तो हमें ये 5 तत्वों का शरीर मिला, लेकिन अगर हम इस दृष्टि से सबको देखते हैं कि सोल कॉन्शियस होकर के, तो कभी भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है लाखों कि यहाँ आने वाला कोई भी स्टूडेंट कभी भी हिंसा नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, और यहाँ हम मानते हैं कि नारी और नर दोनों एक समान भगवान ने बनाए हैं। और आज तो संसार में महिलाएं हर क्षेत्र में कितना आगे हैं। वो अपने परिवार को भी संभालती है, स्नेह प्यार भी देती है और संस्कार भी अच्छे देती है, और संसार में भी बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करती है, और पुरुष भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस होने के अंदर हम ये भेद करने लगते हैं।
तो जब हम सभी का एक विचार हो जाएगा कि हम सब उस एक परमात्मा की संतान हैं और हम सब एक हैं, तो कौन जाति और कैसा भेद, तो हमारे अंदर एकता हो, हमारे अंदर शांति हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हम सभी मिलकर के ये जातिवाद, ये लिंग की हिंसा, ये भेद खत्म कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज का कोर्स कराते हैं, जो पूरा ही कोर्स उसका बेस है कि सभी अहिंसक बन सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ बोला जाता है, अगर आपको नेगेटिव थॉट भी आता है, अभी आपने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया, कुछ एक्शन में नहीं आए, लेकिन अगर आपने थॉट भी क्रिएट किया नेगेटिव, तो वो भी हिंसा है। इतना ज्यादा हम अपने थॉट पर वर्क करते हैं यहाँ पर। और ऐसे यहाँ हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो हिंसा करना तो दूर, हिंसा की बात भी नहीं सोचते हैं। और ऐसे यहाँ आने वाले बहुत परिवार हैं जो बच्चे को या बच्चे को एक समान प्यार देते हैं और एक समान उनको संस्कार देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हम सभी मिलकर के अगर सेल्फ रियलाइजेशन करें, एक परमात्मा शक्ति के साथ नाता, हम सभी कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, फिर क्या जाति और क्या भेद। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबके अंदर अगर हम ये जागरूकता लाएं, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक गॉड रियलाइजेशन, और दूसरा अहिंसा परमो धर्म, ये बात अगर हम पक्की करते हैं तो हम समाज में बहुत शांति ला सकते हैं और सारा भेदभाव, जातिवाद, लिंग भेद, लिंग हिंसा खत्म कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद बहन। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और पैनलिस्ट है, अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ताकि हम इसके बाद उन क्वेश्चंस को ले सकेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा निस्बत हाशमी जी से कि वो भी अपने विचारों को व्यक्त करें। जी सर, जैसे कि इस्लाम धर्म में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और मैं मानती हूँ कि किसी भी रिलीजन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, गॉड के लिए सब बंदे बराबर हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो वो चीज की थोड़ी कमी है। इसीलिए, और हमारे यहाँ जो अभी सोसाइटी बनती जा रही है, जो वर्चुअल वर्ल्ड आ गया है, कोविड की वजह से भी कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है, इसमें निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लोगों में दूरियां हो रही हैं, एक दूसरे से फैमिली बात नहीं करती है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। वो पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि बस मैंने इन्हें फीड करा दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो गई। सिर्फ बच्चे को रोटी देना और अच्छी एजुकेशन देना तो है जरूरी, लेकिन उनको टाइम देना, प्यार देना, स्नेह देना, टच देना, ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे में लव, केयर, इस तरह की फीलिंग्स और अफेक्शंस डेवलप होते हैं। ये मैं ऑफ द रूट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। डिस्क्रिमिनेशन और जो भी बाइस्ड चीजें होती हैं सोसाइटी में, जो भी निगेटिव और सोशल इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं इस बेसिक चीज से अफेक्ट करती हैं और जुड़ी हुई हैं। वो जुड़ी हुई ऐसे हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है, उसको घर में वो प्यार, वो स्नेह नहीं मिलता। वो उसको सही गलत जब मामा पापा सिर्फ डांट के बताते हैं, उनके पास, अभी मैं एक पेरेंटिंग वर्कशॉप कर रही थी, तो वो बताते हैं कि डे में कम से कम पेरेंट्स को 10 to 15 टाइम्स बच्चे को बॉडी टच देना चाहिए, जिससे उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि बच्चे को हक किया जाता है, किस किया जाता है, या कुछ ऐसा बॉडी टच दिया जाता है, या माथे पे हाथ फेर के प्यार करते हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो या तुमने अच्छी पढ़ाई की है। आजकल के पेरेंट्स के पास कुछ है ही, टाइम देने के लिए बच्चों के पास है ही नहीं। तो वो लैक कर रहा है धीरे धीरे सोसाइटी में निगेटिविटी के थ्रू। आप देखिए कैसी कैसी न्यूज सुनने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, मर्डर तक कर रहे हैं जुवेनाइल्स, और अपनी मदर फादर का के साथ ठीक बिहेव नहीं कर रहे, घर छोड़ के चले जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही है। इसकी 2 रीजन है, एक तो हमारा जो पेरेंट्स के साथ इमोशनल टच है वो बहुत कम होता जा रहा है। दूसरी सी एक चीज है कि बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है न्यू जनरेशन। उन्हें, क्योंकि हमारे जो एंसिस्टर्स हैं वो रिलीजन को एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पे पेश करते हैं कि ये बहुत ही रूल्स रेगुलेशन वाली चीज है, तुम इसे फॉलो करोगे तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं। जबकि देखा जाए तो कोई भी रिलीजन हो, वो एक हमें अच्छा इंसान बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। जब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, एक अच्छा इंसान बनना जिसे वे ऑफ स्पीकिंग आता हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आता हो। तो रिलीजन भी यही सिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। बच्चे के सामने एक उसको रिलीजियस बनाना,
और जो उसकी लाइफ में इमोशंस की कमी रही है वो फुलफिल होगी, तो सोसाइटी से, समाज से जो निगेटिविटी है, अवेयरनेस और अफेक्शन, लव, अफेक्शन और एजुकेशन की वजह से वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। और धीरे धीरे सोसाइटी से जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरह का हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट हो, रिलीजियस हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर वो सिविलाइज्ड होगा, कल्चर्ड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, वेल अवेयर्ड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन यही है कि हमें दोनों तरह की एजुकेशन पे काम करना चाहिए, वर्ल्डली एजुकेशन पे भी और रिलीजियस एजुकेशन पे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिस्पेक्ट हाशमी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूंगा रविंदर सिंह जी को भी, वो भी अपने विचारों को व्यक्त करें। देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है ये बड़ा रेलिवेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि मैनेजिंग एंड लिविंग ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ए रिलीजन। धर्म होता ही इसलिए है। और जिंदगी जीने के दो स्टाइल हैं, एक मनी मेकिंग लाइफ है, एक मैन मेकिंग लाइफ है। चॉइस इज ओर्स कि कौन सी जिंदगी हमने जीनी है। तो देयर कैन बी नो पीस विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो गुरु ग्रंथ साहब गाइड्स ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स वननेस। गुरु ग्रंथ साहब का आगाज जो है, इट बिगिंस विद एक ओंकार। God is ultimate reality and preaches us oneness in manyness. एक पिता एकस के हम बारक। तो दूसरा मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि थ्रू एजुकेशन एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वननेस we can create an ideal society. Small counseling groups should be made for students, adults, elders, so their issues can be resolved. Life is not about taking, life is about giving. These values are more necessary in our social setup. So interfaith seminars can be organized to address social, psychological, and even gender-based issue. How women must be respected, what is spirituality, how an ideal human being must live. These are all the life skills we all need. तो मुझे लगता है कि जो ये वायलेंस इन द नेम ऑफ गॉड हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, खास करके वायलेंस जो स्त्रियों में के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत में ही ऐसी ब्रॉटअप दें, ऐसी वैल्यू सिस्टम दें, उनको सिखाएं कि स्त्री के किस रूप के साथ कैसे व्यवहार करना है। स्त्री माँ के रूप में भी है, स्त्री बेटी के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, और स्त्री जो है बहन के रूप में भी है। किस रूप में कैसा व्यवहार करना है, ये बच्चों को हमने ही सिखाना है, ज्यादातर माँ ने ही सिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइफ स्किल वी ऑल नीड की बहुत जरूरत है, इसके लिए हमें जो है सेमिनार्स और इंटरफेथ सेमिनार्स और ग्रुप्स बनाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Harvinder ji. Thank you very much. And I would now request Reverend Varghese Thomas to share his views. Okay, thank you, sir. Let me say that the faith leaders, they can, in the community, they can do a lot of things. जैसे पब्लिक अवेयरनेस हम दे सकते हैं, साथ साथ जो है कम्युनिटी का जो जरूरतों को देखते हुए कम्युनिटी में ही क्या कहते हैं, वैसे वेल विशर्स को ढूंढकर जो है एक दूसरे से मिला सकते हैं। It's a part of a leader. They can do. And concerned about this child early marriage, these things, these are very old thoughts. I think the new generation will not be happy with that. इस चीजों के लिए ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और कोशिश करेगा कि जो बड़े होकर जो बचपन में ही खास करके जो टीनेजर्स को कुछ अवेयरनेस देकर ही आगे बढ़े। जैसे जो मैरिज लाइफ है या फैमिली लाइफ है, इसके बीच में कुछ अवेयरनेस दिए जाते हैं तो अच्छी बात है। फिर तीसरा जो मेन मुद्दा ये है कि फेसबुक या इन प्रकार के जो लेटेस्ट जो नेटवर्क या इंटरनेट के जो एक्सेस है, वो बच्चे के ऊपर जो ज्यादा प्रभाव ना हो जाए, अच्छे थोड़ा से कंट्रोल रखे जाए। अगर
इसके ऊपर भी थोड़ा अवेयरनेस दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों को अपने लोगों के बीच में और पब्लिक के लोगों और पब्लिक में भी इस प्रकार का अवेयरनेस दे रहा है, और कोशिश करेगा इस बात के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ, अभी कुछ और कमिटमेंट है, इसलिए तो मैं इस मीटिंग से भी जा रहा हूँ, और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरे हिसाब से आप सबसे बहुत बड़े कार्य कर रहा है। It's really a honor and privilege to meet all of you. I request even World Vision, even other such a respected organization may connect each one of us together in future also, so that we may able to do better job for this community. God bless you. Thank you so much. Thank you, Reverend, for your thoughts. Thank you very much. Thank you for being with us. And now मैं नवांग सोनम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचारों को व्यक्त करें. Yeah, I would request Nawang Sonam ji to share his thoughts. So here the question is promoting leadership qualities of the response and service providers. Basically, having a leadership quality, you cannot teach somebody the leadership qualities within a short span of time. It actually, proper leader has to be nurtured for life, for years. Proper study of any individual of a society begins at home, and then they go to schools and universities. So at every level, we need to include human goodness in our education curriculum. Insofar, the education system that we have in India is adopted from the British education system, which of course it's good, but it's not adequate enough. You need the Indian values of ahimsa, karuna, these non-violence and loving kindness. This is actually one thing I as a Buddhist want to say is, even though India is the home of Buddhism, it is also a fact that majority of the Indians are not Buddhists. But whenever I see Indians, I see them embodying many Buddhist values in them. So culturally, your community is a very peaceful community. So the concept of non-violence and concept of care for others, this is not rooted in cowardice. This is rather an embodiment of wisdom. Those who are not able to think properly, they act violently and they act selfishly. If you're able to think properly, then human goodness, compassion for others will naturally arise in you. So if you have these values deeply imbibed in children from school time, then the future leaders will come from these children. So if you really want to see good leaderships, I think we should focus on the children. The education of children starts at home. So the responsibility of parents is to make sure that their children grow into good human beings. And then as far as this gender violence and so forth concerned, we are not actually, on one side we are saying we are in the 21st century, but we are not mentally mature if you do not treat the same participant of a human community. If it's a human community, it is going to have two genders. Otherwise, human community will not flourish at all. And then you have your own mothers, you have your own sisters, and so forth. And so, and from a Buddhist perspective, I'm a man in this life. There's no guarantee that I'm not going to be a woman in my next life. So therefore, there is no real basis for demarcation, distinction. What the distinction that we see around is actually based somehow based on how civilization flourished. When human civilization flourished, it's actually the man who has to go out to search for food, hunt,
and fight with others to protect the family. So the concept of protecting the family that is there, and whoever is physically stronger seem to have made it to become the leader of the community. Now in this 21st century, it's not physical strength. Yeah, so we have same mental capability. So therefore, it's important if we want to be an inclusive society to give importance to proper education of our children and also practically make equality a part of your belief system. So if that happens, then we can really avoid this gender violence and so forth. So thank you. That's all. Thank you, sir, for your wonderful thoughts, and rightly said that education begins right at home, and if we have a good education right from the beginning, we have good leaders. We can have good leaders. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. And I would now conclude the whole thing. What we have heard from right from the beginning. कि सब धर्म जो है सद्भावना सिखाते हैं, करुणा सिखाती है, आपस में प्रेम करना सिखाती है, तथा साथ ही साथ हमें एक पॉजिटिव थॉट्स को भी आगे लेके बढ़ने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमें अपने जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन पे भरोसा करने की आवश्यकता है, तथा उनको भरोसा करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हम सीखते हैं उससे उसको अपने जीवन में उसको हमें अप्लाई करने की भी हमें आवश्यकता है। और अभी हमने सुना कि डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे सोसाइटी में पाया जाता है, जहाँ पे faith leaders can play a very important role in this. From their scriptures, they can say to the community what the religion speaks about the discrimination, and we are very fortunate that we have heard that no religion speaks of any kind of discrimination. And also and we have to make sure that everyone is being treated equally as per the law of the country where we live, where we are there, and have a meaningful life. And we should be very true to our religion so that we can promote gender equality and bring like-minded people together so that we can promote self-awareness and one more thing that we heard, that during this pandemic time, that the virtual world has come into existence, and most of the times we engage ourselves in this virtual world, and we spend a lot of time in it, and we are not really looking what the children are going through. So it is very essential that we spend time with the children and have a physical relationship, touch with the children. And every religion also improves our personality, and it also promotes education also. And education should be both spiritual as well as social, so that it will help us to build a good ideal society in the community. And it is very essential that we have heard one of our panelists had said that we have to form an interfaith forum, and more of this kind of webinars should be come into place so that these faith leaders and our faith community can address the issues of the community. And rightly said what Mr. Nawang Sonam had said rightly, that the education starts at home, so that we can have if we build the value system right from the beginning of the child, so that we can have good leaders, and the values also should be promoted in our education system. So what I feel is that by doing all these things, we can have a good ideal society around us. So I thank everyone, each panelist
from the bottom of my heart for what they have shared, what they have concerns, and I believe that in the coming times, you people will be a great help in the community, so that the issues of the community could be addressed through you. So now I would hand over to Mr. Abhilash, so that he can take it further. Altamash, can you hear me, Altamash? Yeah, thank you, sir. Yeah, Thank you yeah, so thank much. you. Thank you, Altamash. And I thank everyone, every panelist, every speakers, participants for taking out very important time for this session. Now I quickly request Afreen Heather to share her vote of thanks, and we will conclude this session now. Hello everyone, Afreen is here. Good evening to the honorable speakers and all others who joined us for this webinar today. It is such an honor for me to get the opportunity to present the vote of thanks. First, I would like to thank Mr. Christopher as Bhaskaran and Mr. Sandeep Singh from World Vision India and Mr. Tom White from UNICEF to grace the event. And thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. And moreover, I like the experiences shared by Mr. Christopher, and also like the way presented by Mr. Tom White and all other faith-based leaders. Your amazing experiences and insightful sharings have really inspired us and are indeed a booster for our future endeavors. And thank you so much, all other participants, for being with us today. Thank you. Thank you so much, Afreen, and thank you everyone. We may now conclude this session, and I would also like to thank my colleagues at Sphere India and UNICEF World Vision India, Miss Mansi, who is the program manager, and Afreen for all the backend support and coordinating with you all people. So thank you so much, and we hope that in future we'll keep meeting and discussing issues like this. So thank you, and now we can end this session today. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.